Assalamualaikum dear students, how are you? Today we are going to solve exercise of unit number 9, all is not lost. In previous lesson we completed the text reading. Today we are going to start from question number A. In the comprehension portion, answer the following questions. Number 1, why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her? नर्स ने हिरा की बहन से क्यों कहा कि वो आए और अपनी बहन से बात करे? The answer could be Hira had severe bus accident. Full stop. She had received severe head and spinal injuries. Full stop. Next sentence. She made her younger sister to come and talk to her, comma, thinking that her voice might activate her sister's nearly dead neurons and brain. Question number 2. Why did the nurse disagree with the doctor's point of view? नर्स ने डॉक्टर के नुक्ते नज़र से क्यों इत्फाक ना किया? The answer could be the nurse did not agree with the doctor's point of view that Hira was a hopeless case and would never walk again in life. Full stop. He thought it was unwise to leave a patient unattended. Full stop. Life is very precious, comma, a chance should be given to a patient. Then question number 3. Why did the nurse ask herself the question, could I be able to justify my stance before the seniors doctor? नर्स ने खुद से ये सवाल क्यों पूछा कि क्या सीनियर और ज़्यादा तजर्बाकार सर्जन्स के फ़ैसले की मुखालफत करना फ़ायदेमंद था? The answer could be the patient was a hopeless case in the eyes of the surgeons. I'm repeating, the patient was a hopeless case in the eyes of the surgeons and they wanted to get the bed spared for other patients. The nurse requested the senior doctors to let her stay in the ICU, but doctors did not allow her. Full stop. She had risked her life for a hopeless case. Full stop. She also thought it would not be worthwhile to oppose the senior surgeons, comma, if the patient could not walk on her own feet. Then question number 4. Describe some qualities of nurse in the story. Very important question. बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में ये आता है. कहानी में नर्स की कुछ खूबियाँ बयान करें. तो आप इसका स्टार्ट इस तरह से ले सकते हैं कि शी इज़ अ बिगिनर या नोविस आप कह सकते हैं इन द प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग. शी इज़ वर्किंग इन द ICU ऑफ न्यूरोलॉजी. Full stop. She is a very sincere to her professional. She is a professional nurse. She is kind-hearted and feels the pain of the patient. Full stop. She is a wise nurse and uses every kind of devices to make patients recover. She is proud of her profession. Full stop. Enough. इतना बहुत है आंसर इसका. Question number 5. Why did the nurse say, comma inverted comma में डायरेक्ट उसकी स्टेटमेंट दी गई है, where there is a will there is a way. नर्स ने ये क्यों कहा कि
इरादा हो तो कोई ना कोई राह निकल ही आती है. The answer could be she said so because he proved it practically that a hopeless patient could be cured if you are willing to fight a lost battle. If there is no way, comma, there is no way. That is end of it. Question number A. Then question number B. Rearrange these sentences in correct sequence. कि इन फ़िक्रों को तरतीब से आप लिखें. तरतीब कौन सी उसने कही है कि जिस तरह से इस स्टोरी में एक तरतीब के साथ सेंटेंसेस थे. यहाँ पे जंबल्ड अप दिए हुए हैं, मिक्स्ड हैं. तो इसमें 8 सेंटेंसेस हैं. तो मैं तरतीब से आपको बता देता हूँ. पहला सेंटेंस होगा एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड. ये दूसरे नंबर पे इसके साथ आप 1 लिख लें. एंड देन नंबर 2 जो सेंटेंस होगा वो 5 पे आ जाए. वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर ऑल वॉज नॉट लॉस्ट. ये दूसरे नंबर पे होगा. ये इसके साथ 2 लिख लें. नंबर 3 पे जो होगा वो पहला सेंटेंस होगा, उसके साथ 3 लिख लें. वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर. नंबर 4 पे जो होगा वो 6 नंबर पे आ जाए. द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट. नंबर 5 पे होगा तीसरे नंबर वाला सेंटेंस आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन. देन नंबर 6 पे लास्ट सेंटेंस आ जाएगा 8वां. वन डे standing at the bedside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. इसके साथ 6 लिख लें. नंबर 7 पे आ जाएं. 7 वाला ही 7 पे आएगा. थैंक्स टू अल्लाह शी वॉज माई पेशेंट एंड ब्ला ब्ला. पूरा ये सेंटेंस हो गया. एंड देन नंबर 8. नंबर 8 पे आएगा आई थिंक 4 लेफ्ट इज लेफ्ट. चौथा रह गया. आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स. 8वें नंबर पे ये आएगा. इसके साथ 8 लिख लें. देन नेक्स्ट वन इज वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में कॉलम ए में बिसाइड के साथ एक कॉलम ए है और कॉलम बी में दोनों अलग से अल्फाज दिए गए. इनको मैच करना है. मीनिंग क्या है बिसाइड के. बिसाइड मीन्स ये मैच करेगा 3rd नंबर पे एट द साइड ऑफ. एंड देन आयरॉनिक का आएगा कन्वेइंग ऑपोजिट मीनिंग. मेड अप के साथ जाएगा डिसाइडेड. एंड देन जस्टिफाई माई स्टैंड्स ये आएगा प्रूव माई सेल्फ राइट. देन आइडेंटिफाई फ्रेजेस एंड ईडियम्स इन द यूनिट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस. अब नंबर बी पे आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ. ठीक है. लाइक विद अटर सरप्राइज. टेक्स्ट में एक फ्रेज यूज़ की गई थी. इसको आप इडियम कहेंगे, इडियम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं. फ्रेज क्या है? फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है. एंड देन यूज एज अ सिंगल वर्ड. और जिस तरह से इडियम्स हैं, इडियम इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड यूज एज अ सिंगल एंटिटी. और विद अटर सरप्राइज बड़ी हैरत से एक ये हो सकता है. अ स्मॉल रिकवरी, अ बिग स्माइल, फाइट अ लॉस्ट बैटल, अ होपलेस केस. ये सारे फ्रेजेस एंड इडियम्स के तौर पर आप सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं. नंबर सी. यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस. गिव फर्स्ट एज वर्ब्स एंड देन एज नाउन्स. अब जो ये अल्फाज नीचे दिए गए हैं केयर, वॉक, सरप्राइज, रिक्वेस्ट, नीड, स्टेट, ये इनको वो कहता है कि पहले आप वर्ब के तौर पर यूज़ करें और फिर नाउन के तौर पर. तो चलें हम स्टार्ट करते हैं. हर एक वर्ड को दो सेंटेंस बनाते हैं. केयर का वर्ब के तौर पर आप इस्तेमाल करें तो सेंटेंस आप लिख लें. अवर टीचर टेक्स केयर ऑफ हर स्टूडेंट्स. गॉट इट. इसको लिख लें. अल्फाज की में जो है वो ज़्यादा मुश्किल लिखे होते हैं तो मैं इजी आपको बता रहा हूँ. देन नेक्स्ट इसी का हम नाउन बनाते हैं.
सॉरी नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं सेंटेंस में। केयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन। केयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी रिलेशन। वॉक, वॉक को वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। ही कैन नॉट वॉक ऑन द वॉल, सिंपल। ओके, नाउन के तौर पर वॉक को यूज़ करते हैं। डॉक्टर एडवाइज्ड हिम वॉक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा वर्ड है, सरप्राइज। सरप्राइज में आप इसको वर्ब के तौर पर यूज़ करें तो आपके सामने सेंटेंस ये आ सकता है कि ही एट होल पिज़्ज़ा एंड सरप्राइज्ड मी, ठीक है। ओके, देन सरप्राइज को नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं। आवर टीचर हैज़ अ सरप्राइज फॉर हर क्लास। देन रिक्वेस्ट वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू राइट अ लेटर, नाउन के तौर पर। ही रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फॉर मनी। देन नीड वर्ब के तौर पर। ही नीड्स मनी, फुल स्टॉप। नीड नाउन के तौर पर। ही इज़ इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी। स्टेट वर्ब के तौर पर बयान करना। ही स्टेटेड हिज पॉइंट क्लियरली। स्टेट नाउन के तौर पर यूज़ करते हैं। ही इज़ इन स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। ओके, नेक्स्ट वी आर डन विद इट। देन ग्रामर पोर्शन आ गया। री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ, पुट इन आर्टिकल्स ए एंड दे टू रिप्लेस वेयर नेसेसरी। तो इसको मैं स्टार्ट से पढ़ता जाता हूँ, जहाँ जहाँ आर्टिकल लगाना हुआ वो भी मैं साथ पढ़ता हूँ, आप लिख लीजिएगा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, comma, is a famous proverb. Many a wise man has approved it. It is a altogether wrong notion to ignore it. The people who has approved it, sorry, the people who adopt this fine principle, comma, find an ultimate find an ultimate victory. The man who does not act upon this rule cannot succeed in the life. What a lesson it has for all of us. ओके, देन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इसके लिए अलहदा से मैं डिटेल वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा। उसमें डिटेल्ड रूल्स इसके होंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के। तो इसको फ़िलहाल के लिए पेंडिंग करें, आपको एक लेसन मिल जाएगा। देन recapitulate your previous knowledge about direct and indirect narration and answer the following question. सेम क्वेश्चन उसी के साथ लिंक्ड है ये। And then compound prepositions. Compound prepositions are two or more words. Compound prepositions क्या हैं? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज हैं, working together, इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, as one word, एक लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, and functioning as a preposition, और function उनका क्या होता है? preposition का as a unit यूज़ होते हैं, लेकिन preposition के तौर पर तो हम उसे कहते हैं compound prepositions। और एग्जाम्पल दी हुई है, he could not attend the seminar because of his brother's marriage. because of क्या है? compound prepositions है। then इसी से linked E exercise है, complete the sentences with the given compound prepositions along with, according to, in front of, away from, because of, instead of। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट वन से। डैश माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक। तो आप लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक। सेकेंड, ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ ill health. Got it?
I am standing in front of the school building. Number 4. He is coming along with his friends. I am away from my home right now. He left for Sialkot instead of Lahore. तो ये नंबर 6 कंप्लीट हो गया. देन past perfect continuous tense. The structure of past perfect continuous tense is, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब हैड आता है, हैड के बाद बीन आता है ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर, एंड देन मेन वर्ब के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है उसके साथ आईएनजी हम लगाते हैं. ओके, इसके यूजेस क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है. द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज लाइक द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट की तरह होता है. किस तरह से, बट इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शंस, लेकिन इसमें ज़्यादा तवील जो है वो एक्शंस दिखने को मिलते हैं इन द पास्ट, माजी में. बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, कि एक एक्शन होने से पहले एक ज़्यादा तवील जो है एक्शन वो पास्ट में बयान किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रहीम स्टार्टेड वेटिंग एट 9 AM, ये एक एक्शन हो गया. आई अराइव्ड एट 11 AM, ये दूसरा एक्शन हो गया. तो यहाँ पे फिर इन दोनों को कंबाइन करके एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाया जाए तो हम ये लिखेंगे व्हेन आई अराइव्ड कॉमा रहीम हैड बीन वेटिंग. रहीम हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours. तो 2 घंटे से वो पहले इंतज़ार कर रहा था, वो एक्शन. और आप देख लें कि व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है, और ये एक्शन, इन दोनों एक्शन को जब आप बयान करें इस तरह से कि एक सर्टन एक्शन जो है ना वो उसकी लॉन्गर ड्यूरेशन हो दूसरे एक्शन के होने से पहले. वी ऑल्सो यूज़ फॉर एंड सिंस विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फिर सिंस और फॉर्स भी यूज़ करते हैं हम. इसके साथ लिंक जो फॉलो अप है इसका 5 F. Write the past perfect continuous form of the verbs given in brackets. Number 1. Slim was sitting on the chair out of breath. He had been running. Got it? He had been running. Run के साथ बेस फॉर्म के साथ ing हम लगाएंगे. We had been walking along the road for 20 minutes with the car stopped and the driver offered us a lift. I had been doing my homework for 2 hours and when my friend came, they had been taking exercise since morning. Number 5. The patient had been crying with pain when the doctor arrived. Got it? Then exercise D, make 5 sentences using the past perfect continuous tense and convert them into negative and interrogative sentences. This is your assignment. And then we are done.